ऑल इंडिया टाइम। नमस्कार दर्शक मित्रों, विश्व आदिवासी दिवस निमित्ते 9 ऑगस्टना रोज मानगढ़ खाते 1507 आदिवासी शहीदों ने श्रद्धांजलि अर्पण करवा दाहोद जिल्लाना दाहोद तालुकाना चांदावाड़ा गाम अने बावकी फळियाना आदिवासी समाज द्वारा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम योजायो हतो। कार्यक्रममां परंपरागत आदिवासी वेशभूषामां सज्ज युवानो अने कलाकारोए तीरकामठा, गोफन अने धारिया जेवा परंपरागत शस्त्रोना प्रतीको साथे लोक नृत्य करी मानगढ़ना शहीदोने वंदन कर्युं। आ प्रसंगे हिमराजबी भांभोर, दलासिंहजी भांभोर, नवलभाई भांभोर, राजूभाई सहित मोटी संख्यामां आदिवासी समाजना आगेवानो अने ग्रामजनो उपस्थित रह्या हता। रिपोर्ट राजूभाई एम भांभोर साथे नवलभाई नीनामा। जय जोहार, जय बिल प्रदेश। आज मानगढ़ की इस पवित्र धरती से हम ये हमारे सामाजिक स्तर के जितने भी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के जो साथी हैं वो आए हुए हैं और आज इस गोविंद गुरु धोनी धाम पे मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि आपने कल परसों से एक मीडिया के अंदर बहुत बड़ी चर्चा चल रही है कि दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, माननीय हनुमान जी बेनीवाल जो लोकसभा के सांसद हैं, उन्होंने लोकसभा के अंदर एक प्रश्न लगाया और प्रश्न के माध्यम से ये पूछा कि आदिवासियों की आस्था का केंद्र, पराक्रम, शौर्य और वीरता का प्रतीक मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक बनने योग्य है या नहीं, या बनाना चाहते हैं तो कब तक। उस पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री माननीय गजेंद्र जी शेखावत जी ने अपने जवाब में ये दिया कि आज यह एक ये कहते कि भविष्य में बना सकते हैं या बना लेंगे तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने जो जिस तरीके से उस प्रश्न का जवाब दिया उसके अंदर यह कहा गया कि यह मानगढ़ धाम है वो राष्ट्रीय स्मारक बनाने योग्य नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से ये हम बताना चाहेंगे कि यह जो प्रश्न का जवाब जिन्होंने दिया कि केंद्र की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, और कहीं ना कहीं आदिवासियों का जो आस्था का केंद्र है मानगढ़ धाम मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, वो उस आदिवासियों की अस्मिता, पराक्रम और वीरता का अपमान करने का काम किया है। मैं इसका कड़े तौर पर निंदा करता हूं और मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के तमाम आदिवासी युवा भाइयों, आज हमारे जो 1507 आदिवासी शहीद हो गए उनको एक प्रमाण की जरूरत पड़ रही है। तो यह कहीं न कहीं जिस आजादी की लड़ाई के अंदर अंग्रेजों के साथ में, मुगलों के साथ में और रजवाड़ों के राज के समय के अंदर हमारे आदिवासियों ने एक गुरु गोविंद के नेतृत्व के माध्यम से यहाँ पर मानगढ़ की पहाड़ी पर इकट्ठा होकर एक आंदोलन शुरू किया था और उसके में हमारे 1507 आदिवासी शहीद हो गए, उनका अपमान किया है। तो यह कहीं न कहीं इस क्षेत्र के अंदर के आज मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान और पूरे देश के अंदर यह मात्र मानगढ़ धाम है, वो आदिवासियों का ही केंद्र नहीं है। उस जमाने के अंदर अंग्रेजों के सामने लड़े तो वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे इस क्षेत्र के अंदर राजस्थान प्रदेश की जो जनता है उसको भी कहना चाहूंगा, यह आजादी की लड़ाई के अंदर अंग्रेजी हुकूमत के सामने लड़ने वाले तमाम जितने आदिवासी भाई थे उनका अपमान किया है। तो इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे इस प्रदेश के अंदर जितने भी आदिवासी भाई आ रहे हैं वो ये केंद्र सरकार की जो मंशा है, भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है, वो कहीं ना कहीं हमारा अपमान करने की मंशा हुई और इस अपमान का हम आने वाले समय के अंदर एकता के माध्यम से मानगढ़ की पहाड़ी पर इकट्ठा होकर एकता का संदेश देंगे। यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। जय जोहार, जय आदिवासी, मानगढ़ धाम के। मारू नाम भाभोर हिमराजभाई बुरजीभाई, दाहोद जिल्लाना दाहोद तालुकाना छांदावाड़ा ने बावकामांथी जे एक ज परिवारमांथी आवेला અમે બધા પરિવારના ભાઈઓ છીએ અને હર વર્ષની જેમ અમે 9મી ઓગસ્ટ પહેલા 5 દિવસ કે 6 દિવસ પહેલા અમે માનગઢના દર્શન કરીએ છીએ અને જે જાગતી ધૂણીના દર્શન હર વર્ષે અમે કરવા માટે આવીએ છીએ, જેમાં
માનગઢ ધામ એટલે જે આપણા બાપ દાદા ઘડવૈયા જેઓ માનગઢ ધામમાં અંગ્રેજો સામે લડાઈ લડતા અને અંગ્રેજોએ આપણા આદિવાસી પરિવારના આપણા આદિવાસી ભાઈઓને આપણા ગઢદાદાઓને 1507 જેટલા આ માનગઢ ધામમાં શહીદ થયા હતા. એના શિલાલેખો પણ હાલના તબક્કે છે અને એમના પરિવારો પણ હાલના તબક્કે જાગૃત છે. અને અમને એવું થાય છે કે આપણા આદિવાસીઓને આટલું 1507 જેટલા જો માનગઢ ધામમાં શહીદ થયા છે એના અનુસંધાને અમે હર વર્ષે ધૂણી જાગૃત કરવા આવીએ છીએ. અને અમારા બાપ દાદા જે આદિવાસીઓ મરણ થયેલા છે એના લેખ મુજબ જે શહીદના જે ગુજરાતમાં આપણે ધૂણી છે અને રાજસ્થાનમાં જે એનું સ્ટેચ્યુ ઊભું કરેલું છે એના અનુસંધાને અમે આજ આ ધામ પર જે ગુરુ મહારાજની જોડે અમે એક દર્શન માટે આવ્યા છે અને આજે ધૂણી જગાવી અમે ધામધૂમથી દર્શન કરી અને ફરી અમારા પરિવાર સાથે અને અમારા ભાઈઓ સાથે અમે અમારા અહીંયા જે દર્શન કરવાનું પૂર્ણ કરી અને અમે પરત ફરીશું. બોલો ગુરુ ગોવિંદ કી જય, બોલો ગુરુ ગોવિંદ કી જય. मेरा देश नहीं जा सकता। अंग्रेजों का मन्ना हुक्म से आपको खालसाना राज में रहना पड़े। खालसाना राज એટલે बाहियाना राज राजा महाराज में धीरे धीरे फिर गुरु गोविंद महाराज को कमोई में 25.5 बीघा जमीन दी, वहाँ पर मुकाम किया, वहाँ पर सेवा पूजा की, वहाँ पर रहे। धीरे धीरे पता लगा हमारे बाप दादों को, मेरे पिताजी का नाम जोरजी महाराज था, उनके शिष्य थे। पता लगा कि गुरु गोविंद महाराज लिम्बड़ी के पास में आ गए हैं कम्बोई में। वहाँ पर हमारे बाप दादा गए, उनको मिले, वहाँ पर मुकाम किया। 2-3 दिन आना जाना शुरू किया। हमारे राजस्थान से भक्तों ने फिर राज वाले गाजो छोड़ाए तो वे हमारे दादा ने कहा, जोरजी महाराज ने कहा करे कि गुरु बाबसी हमें मानगढ़ वाला या जांबूखंड वाला या हमारी मान भाव लेनी पड़े। मारा बेटा फोन मान भाव तमें लईने आया, मारा बेटा मान भाव ते लईने आया का में गाजा नहीं ली पड़े। मैंने राज वाले गाजो छोड़ाया से હું गाजो नहीं पियो, जबरदस्ती गाजा पिला दिया। इसके बाद में पैर में अंग्रेज़ों ने पैर काट के देखा था दूध निकला था साबरमती जेल में, तो जलन शुरू हो गया। धीरे धीरे बड़ा बड़ा भोपाल ने बड़ा डॉक्टर ने बड़ा भगत थाकी जात बावसी ने कहा दुख मोटी नहीं। इंदौर में आंगળી कपाड़ी धीमोरे वणदारा आज बदल में के इंदौर में मोटो डाकखानो। इसके बाद में फिर धीरे धीरे दुख नहीं मट्यू। फिर गोधरा में मुसलमान आइए, गुरु बावसी के 18 कोम चले थे, घासी मोसी तिली तमोली सब चले थे। तो फिर वो એક તીર એક સમાન, એક તીર એક સમાન। મારું નામ ભાભોર હિમરાજભાઈ ભુરજીભાઈ, દાહોદ જિલ્લાના દાહોદ તાલુકાના સાંદાવાડા અને ભાવકાથી અમે જે માનગઢ ધામમાં આવ્યા છે ત્યારે જ્યાં જે માનગઢ ધામમાં એમ કહેવામાં આવે છે કે ગુજરાત, એમપી, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ જે બોર્ડર પર આવેલું એક ધામ આ માનગઢ ધામ માનવામાં આવે છે। ત્યારે આ માનગઢ ધામમાં અમારા જળ, જમીન અને જંગલ છીનવવા માટે, આપણા આદિવાસીઓને હડપવા માટે, આપણી જમીન હડપવા માટે જે અંગ્રેજોએ આપણા આદિવાસીઓ પર ચડાઈ કરેલી, ત્યારે આપણા આદિવાસીઓએ અમે લડાઈ લડતા આજે એનો શિલાલેખ પણ આપણી નજીક જોવા મળે છે અને ગુરુ ગોવિંદનું ટેચ્યુ પણ આપણી સામે જોવા મળે છે। ત્યારે આ લડાઈ શરૂ કરેલ તેમાં આ માનગઢ ધામમાં અમારા ભાઈઓ કે અમારા ગઢદાદાઓ આદિવાસીઓ જે લડવામાં પાસી પાની ના કરતા, કેમ કે અંગ્રેજોની સામે અંગ્રેજો પાસે બંદૂકો હતી ને આપણી પાસે તીર કામટા હતા। ત્યારે તીર કામટા લડતા આદિવાસીઓનું જે આ માનગઢ ધામમાં જે આ ડુંગરો આપણને ચારે બાજુ દેખાય છે એમાં હતાવામાં પાસી પાની ન કરતા પણ મરણ પામેલા હતા। તેમાં મરણ પામેલા 1507 જેટલા આપણા આદિવાસીઓ મરેલા છે માનગઢ ધામમાં। એને એક ઉજાગર કરવા માટે અત્યારે ઘણો બધો વિકાસ થઈ ગયેલો છે, પણ જે આની યાદમાં જે આપણા ગુજરાતમાં
ધૂણો રચવામાં આવે છે ત્યારે અત્યારે પણ ધૂણી અખંડ માનવામાં આવે છે અને રાજસ્થાનમાં જે એનું 1507 આદિવાસીઓ મર્યા એનું સ્ટેચ્યુ ઊભું કરવામાં આવેલ છે આપણી અને જે હાલ આપણા આદિવાસીઓ આ જાગૃત ધામને મનાવવા માટે આખા વર્ષના 3 થી 4 પ્રોગ્રામો આવે છે ત્યારે 17 ઓગસ્ટે જે 4 રાજ્યોના આદિવાસીઓ આ સંમેલન કરવા માટે ભેગા થાય છે અને 9મી ઓગસ્ટ આજે 4 દિવસો બાકી છે 9મી ઓગસ્ટ આવે ત્યારે પૂરા ગુજરાત અને ઇન્ડિયામાં જે આદિવાસીઓ ત્યાં રેલીઓ કાઢી અને આને એક આ વિશ્વનો આદિવાસી દિવસ તરીકે પણ માનવામાં આવે છે આજે અમે આવ્યા છે ત્યારે માનગઢ ધામમાં અમે જે દર્શન કરી ધૂણીનો લાભ લઈ અને ટેસ્યુ તરફ અમે જે અમારા ભાઈઓ જોડે બધા મળીને અને અમારા જે હથિયારો બાપ દાદાના આપેલા એ પ્રમાણે અમે હથિયારો લઈને પણ અહીં તો ઉમંગ કરવા માટે આવ્યા છે જય જોહાર જય આદિવાસી.